Proceed. So this is what we had seen. I'll not go through each and every step. Just a revision. We had seen examples of mechanism. One was free radicals chain reaction mechanism, right? Initiation, propagation, termination. It's a chain reaction, right? उसके बाद में molecular intermediate non-chain reaction, intermediate formation and decomposition, 2 steps. तो chain reaction में 3 step होता है, non-chain reaction 2 step होता है. So transition complex non-chain reaction, again formation of activated complex or transition complex and decomposition, 2 steps. And then we have seen how this equation, this rate equation, gives second order reaction and first order reaction at different conditions. High pressure रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लो प्रेशर है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है. Then we saw testing of kinetic models. Then we have to hypothesize the intermediate formed. What are the conditions of the intermediate? Okay. And type 1 was, we assume steady state approximation. That means excess small and rate of change of intermediate with time is 0. That is steady state approximation, right? And then here I added one step, indication. Rate equation में denominator में 1 plus concentration term है, right? We have seen this 1 plus concentration term यहाँ था, right? So in this case it indicates it should be type 1 intermediate. This is just looking backward, okay? ऐसा कुछ रूल नहीं बनाया किसी ने, but this is my observation that अगर ऐसा आया तो type 1 intermediate assume किया तो you'll get this kind of rate equation. And second one is type 2, where we assume equilibrium of the intermediate, and in this case indication is denominator has only concentration term instead of 1 plus concentration term. Okay, so in that case we can assume type 2 intermediate. It's just an observation based on what derivations we have seen. Any questions? This is the right time to ask questions if you have any, before we proceed further. ठीक है, नहीं है question, so let us proceed. So we have looked at intermediate, we have looked at reaction scheme, the mechanism, and then hypothesis. There are 4 steps involved in this, any mechanism derivation. So first we assume some intermediate, whether it is free radical, ions, transition complex, or molecules. Then we assume a reaction scheme, chain reaction or non-chain reaction. Generally, free radical goes with chain reaction, transition complex and molecule goes with non-chain reaction. It's a general trend or observation. Then we assume a mechanism, free radical chain. जैसे ये combine किया तो free radical chain reaction हो गया, और यहाँ पर किया तो molecular intermediate non-chain reaction, transition complex non-chain reaction. So this leads to this one.
This combination leads to this one. नहीं आ रहा ये. This combination leads to free radical chain reaction mechanism, and these two, नीचे वाला, lead to this. And this. So combination of free radical chain reaction gives free radical chain reaction mechanism, transition complex non-chain reaction, ये रहा, और molecular intermediate chain non-chain reaction. So there are these combinations which will lead to different what you call mechanisms, and then we can assume a hypothesis as type 1 intermediate or type 2 intermediate. Type 1 में concentration of intermediate is 0 and rate of change of intermediate with time is also 0. It's steady state approximation. And type 2, if you look at all the equations, elementary equations, reactions, the rate of change of x is equal to 0. We'll see the examples and then we'll understand the difference between these two hypotheses. So this is summary of what we have seen. Any questions? Sir, hello. Yeah. Sir, transition complex में non chain ही क्यों होता है reaction? Now you are going to chemistry now, right? Basically this comes from chemistry. I don't know too much of chemistry, but this is the observation. So क्यों होता है that only chemistry people can tell you. I don't have an answer to that. It's just no observation कि ऐसा ऐसा होता है, and this is what is given in the book also. Why it doesn't have chain reaction, I don't know. Maybe chain reaction you need free radicals. That may be the requirement कि chain reaction के लिए free radical चाहिए. Transition complex से chain reaction नहीं होता है. Okay. Okay. Theoretical basis I don't know, but this is just an observation कि free radicals से always you'll have a chain reaction, and these two cases you'll have non-chain reaction. ठीक है? So let's solve some problems. There are 2 or 3, then 3, 4 examples which are repetitively asked in the exams. So one of them is this one from 11th scale. Experiment shows that the homogeneous decomposition of ozone proceeds with a rate minus rate of ozone decomposition is equal to K into concentration of O3 square divided by concentration of O2. Now what it is asking is what is the overall order of reaction? क्या होगा overall order of reaction? Yes, a part is very simple. What is the overall order of reaction? How do you find the overall order of reaction? One. होता है क्या? One. Yeah, you're right. 1. So you add this power or this order and this order, and that sum of these two is essentially overall order. Okay? So it's very simple. First part is very simple. Overall order is the sum of powers of all concentration terms. ठीक है? Any questions on overall order? First part. जितने भी concentration term है उनका जितना भी power है सबको ऐड करने से अपने को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है. ठीक है. Second part is suggest a two-step mechanism
यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है 2 स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप मैकेनिज्म क्या होता है? चेन रिएक्शन होता है कि नॉन चेन रिएक्शन होता है? नॉन चेन। नॉन चेन, राइट? तो यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि सजेस्टेड 2 स्टेप मैकेनिज्म, दैट मीन्स वी हैव टू अज्यूम a non-chain reaction mechanism to explain this rate and state how you would further test this mechanism. ठीक है? So overall reaction, this is an overall reaction. दिया है क्या? नहीं दिया, right? So we can write overall reaction. Overall reaction is 2 moles of ozone give 3 moles of oxygen. And mechanism, we'll suggest 2 steps. Step 1, O3 forms or gives O2 plus transition complex O star. Kavi just write O, you don't have to input anything, but I have put star explicitly to indicate it's an activated complex. And we say that this is a fast reaction. Now, Ritesh, your question will come in, right? आप बोल रहे थे slow rate control, we'll see all those things now. Yes, sir. Okay, so first step is formation of intermediate, which is a fast step. And second step is O3 will react with intermediate to give oxygen. And we say that's a slow step. And slow step is always rate determining. Barabar? Now we observe in this case the rate equation है इसमें essentially it is concentration term, right? You can have the same thing as this one. So you see the denominator में concentration term है, 1 plus concentration नहीं है. तो मेरा जो observation था कि when there is concentration term only in the denominator, what kind of hypothesis can we use? याद है पीछे से? Type 2. Type 2, right? So it indicates कि ये type 2 होना चाहिए अपना, right? So denominator of rate equation as concentration term indicates type 2 intermediate. Therefore intermediate is in equilibrium with reactants. Right? See, developing mechanism is not an easy thing. The people who do research in chemistry or who do suggest this mechanism, they spend years and years trying to develop mechanism. हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है कि understanding what are the steps involved and how we can get the rate equation. They must have gone through multiple steps, multiple assumptions, multiple mechanisms, hypotheses. ये करना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. Oh, it doesn't match with experiments. Again, go back to the drawing board बोलते हैं. Go back to experiments or propose a new hypothesis. So that iterative process must have been done many times to actually get a certain mechanism. So हम वो नहीं करने वाले. We are going to assume certain thing which will indicate based on our observations कि ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा होना चाहिए. ठीक है? So in type 2 is indicated. Rate equation is rate of slowest step, step 2. बराबर? The rate equation रहेगा. If I look at this one and this one, if I say this is 1, sorry. Okay. So slowest यानी इसका जो rate रहेगा step 2 का, that is your rate determining step. That means overall rate will be essentially given by step 2. Right? So we can write step 2 के लिए minus rate of O3 यहाँ पर जो है, right? Rate of O3 is equal to K3 into concentration of O3 into concentration of intermediate. Reactant से ही है O3 and intermediate. Right? So minus dO3 by dt is equal to K into concentration of O3 into concentration of intermediate. ठीक है? यहाँ पर question same आ गया. So let me just remove this step from here.
नंबरिंग में प्रॉब्लम आएगा. So let me put some other number, right? A and B. ठीक है. So I get this rate equation which is indicating कि इतना rate होना चाहिए. But now we know that this is not measurable quantity. We cannot measure the intermediate. So we need to find out the concentration of intermediate in terms of some measurable quantity. And what are the quantities you can measure? क्या measure कर सकते हैं हम? Look at the overall reaction. If you look at the overall reaction, we can measure ozone concentration and we can measure oxygen concentration. That's all we can measure. We cannot measure the intermediate concentration. So we have to find a substitute or equation to replace O3. Oh, sorry, O star concentration. So we need to find the value of O star concentration, which is unknown and normally unmeasurable since it is in very small quantity. So use step 1. अभी हमको पता है कि टाइप 2 लेने का. टाइप 2 is equilibrium, right? So use step 1 to calculate O star value in terms of measurable quantity. So rate of step 1 is R of O star रहना चाहिए. dO star by dt is equal to K1 O3 minus K2 O2 into O star. ठीक है. स्टेप 1 क्या था, राइट? तो यहाँ पर जो रहेगा ये फॉर्मेशन है O स्टार इज इक्वल टू K1 इंटू O3 माइनस रिवर्स रिएक्शन है K2 इंटू O स्टार. ठीक है. ये हो गया. सो नाउ वी अज्यूम टाइप 2 इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम. दैट मींस दिस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो है दे आर इन इक्विलिब्रियम एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट लाइक दिस, राइट? तो इक्विलिब्रियम रहेगा राइट. सो वी कैन से दिस जो इक्वेशन लिखा हमने dO star by dt is equal to K1 O3 minus K2 O2 into O star. You can say that this is equal to 0. This is the rate of change of intermediate. dO star by dt is equal to 0. Right? So ये हमने डाला equal to 0. So from equation 2 and 3, that means if this is equal to 0, what you get is K1 O3 minus K2 concentration of O2 into O star is equal to 0. Right? इसको राइट हैंड साइड में लेके आया K1 into concentration of O3 is equal to K2 into O2 into O star. So O star we get in terms of O3 and O2 concentrations. ठीक है. सर वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन का रेट है ना, फॉर्मेशन का है. तो सर वो K2 का वो टर्म है ना, वो पहले आएगा. स्टेप 1 ये है, राइट? हाँ, यस फॉर्मेशन सर. कहाँ से आ रहा है? फॉर्मेशन में क्या होगा? डजंट मैटर, वो इक्वल टू 0 ही है. प्लस माइनस क्या, बट दिस करेक्ट. फॉर्मेशन इज फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट? फॉर्मेशन इज फॉरवर्ड रिएक्शन. सो K1 into concentration of O3, हाँ, यस. right? Destruction or consumption is reverse reaction, so K2 into O2 into O star, ओके सर. right? So K1 into O3 minus K2 into O2 into O star, right? That's this equation, right? And that's why we are written as a reversible reaction, because we are saying it is in equilibrium. Equilibrium में always it is a reversible reaction जो रहता है वो equilibrium होता है. And this is not reversible. This is
one way, right? It is irreversible reaction. So यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, समझे ना? That's why we are taking step 1, उसका इक्विलिब्रियम का रेट इक्वेशन लिखेंगे, and then from there we find out what is the value of O star and substitute that in the overall rate equation. हेलो सर। Yeah. सर स्टेप 2 में जो है वो O2 के साथ रिएक्शन होना चाहिए ना, ये इसका O स्टार का। O2 साथ क्यों होगा? O2 is product. O2 is the product. O2 साथ क्यों होगा reaction? We are talking about decomposition of O3 to give O2, right? So reactant is O3, not O2. We are Okay, sir. decomposing O3. We are not reacting O. We are not forming ozone. We are not looking at formation of. We are looking at what we call decomposition of ozone. समझा क्या देवेंद्र? हाँ सर, अभी समझ। Right? So we are talking about decomposition of ozone. So second step में decomposition of ozone है तो ozone के साथ ही react होना चाहिए, तो कि O2 कहीं कहीं नहीं आएगा फिर, नहीं तो, right? स्टेप में भी है, सेकंड स्टेप में भी है. So that's why we are essentially we are saying कि ये जो है, ये फर्स्ट स्टेप जो है इक्विलिब्रियम, यहाँ से हमारे को we will find out कि what is the O star concentration or intermediate concentration, and use that in the second step to find out what is the rate of decomposition. ठीक है? So now we know what is O star. O star is equal to K1 into O3 concentration equal to K2 into O2 concentration. You can substitute for O star in equation 1, which was this rate equation for decomposition of, step 2. Step 2 was this rate controlling ये था ना? This is your rate controlling step. तो इसमें हम O star का वैल्यू डालेंगे and what we get is rate for decomposition of O3. ठीक है? So we take this equation 1, यहाँ पर O star यहाँ substitute किया, and what we get is this equation minus RO3 is equal to minus DO3 by dt is equal to K3 into O3, और यहाँ पर substitute किया तो K1 into O3 upon K2 into O2. Right? So if you bring all the constants together, K1 K3 upon K2 into ozone square upon O2 concentration. ठीक है? We can combine these three constants into one, a new constant K, and what we get is the desired equation, K into concentration of ozone square upon concentration of oxygen. ठीक है? Any questions on? सर वो सेकंड रिएक्शन स्लो की वो नहीं समझ। तो वरना क्यों नहीं पूछने का? Because that is, you are talking about theory now. I don't know theory, right? किसी ने derive किया है, assume किया है. We are always, see, when you say mechanism, we are always proposing something. Understand? गिवन था क्या सर वो रिएक्शंस? Given नहीं है. Somebody has derived a mechanism, and we know that is what is proposed. See, they publish papers. You know, research करते हैं, publish करते हैं papers. Mechanism कहीं किसी और publish किया है, I'm sure. And from there we get this thing कि first step is fast reaction, which is formation of intermediate, and that is why it is equilibrium. The second step is decomposition, and that's a slow step. सर स्टेप्स फिर से बताइए ना सर एक बार। हाँ? क्या बोले? सर एक बार रिपीट कीजिए ना, शॉर्ट शॉर्ट। ओके, पूरा? हाँ मतलब मैकेनिज्म रिएक्शन के बाद।
Right. So let's do it. It's not easy. Let's see. See, this is all a hypothesis. जितना भी है hypothesis है. There is no proof. ये fast step है, ये slow step है. Right. The only thing is we can say कि ये derive क्या equation. Does it really match with experimental data? If it does match, then it is correct hypothesis. If it does not match, it is not correct hypothesis. सर वो टाइप 2 इंटरमीडिएट क्यों लिया? Type 2 क्यों बोला, right? So type 2 में क्या है? What is type 2? What is type 2? डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन आता है, हाँ? डिनोमिनेटर में सिर्फ कंसंट्रेशन आता है. Just an observation. That's my observation. कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको observation. That's just my observation looking at many derivations जो हमने देखे हैं. Based on that I observed कि ठीक है, जहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन नहीं है या सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है, then it is type 2. But I'm sure there is some basis for it, and that is part of chemistry. I'm not so sure. But what it means is ये जो equilibrium reaction है और reversible reaction है for formation of intermediate, that means it is at equilibrium. Equilibrium पे हुआ तो we are saying it is concentration or rate of change of concentration is 0. That's what type 2 means. तो जो हम assume करते हैं equilibrium में है, automatically it means that okay, it is type 2 and that rate of change of intermediate concentration is equal to 0. समझा क्या? The moment I say it is a fast reaction and it is a reversible reaction at equilibrium, that's type 2. Now, why it is type 2, why it is not type 1, I don't have an answer to it. That is theory of chemistry. इसलिए मैंने भी बताया कि ऑब्जर्वेशन है मेरा कि व्हेन वी सी कि हमारे ये डिराइव करने का है, व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन वी नीड, देन वी इट विल टेल यू विदाउट एनी कंफ्यूजन कि किस टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा. सर देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर टाइप 1? टाइप 1 में डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन आता है. वी विल सी एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो. वी विल सी डेरिवेशन ऑफ दैट आल्सो. सेकंड एग्जांपल वही ले रहा हूं मैंने कि जब 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन आता है तो व्हाट इज द प्रोसीजर और व्हाट आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. Sir, the decomposition of the ozone is the example of negative order, na? It's not negative order. कहाँ negative order? With respect to oxygen. हाँ, yeah. Yes, sir. See, overall reaction जो रहेगा ना, overall reaction negative नहीं होगा. यहाँ पर overall reaction कितना है? Right? हमने देखा था कि order is always, it can be 0, it can be fraction, it can be integer. Negative नहीं रहेगा order. Overall reaction, overall order, sorry. यहाँ पर with respect to oxygen it is negative, but overall order is 1. Yes, sir. Okay. ठीक है. What does it mean when I look at this? When I say minus RO3 is equal to KO2 square upon O2 concentration, what does it mean? What does it indicate? जैसे concentration of oxygen बढ़ेगा तो क्या होगा? rate ओजोन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कम होगा? कम होगा सर. कम होगा. So if you want to decompose ozone, what we should do? कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कम लेंगे. ऑक्सीजन कम करना चाहिए. मतलब क्या होना चाहिए? द मोमेंट इट डिकम्पोज वी शुड रिमूव ऑक्सीजन. राइट? सपोज यू आर डूइंग अ रिएक्टर, इफ यू आर डूइंग अ बैच रिएक्टर, तो बैच रिएक्टर में क्या हो जाएगा कि यू नो द डिफरेंस बिटवीन बैच रिएक्टर एंड कंटिन्यूस रिएक्टर, इज इट? बैच प्लस कंटिन्यूस प्रोसेस पता है कि नहीं आपको?
बैच रिएक्टर इज लाइक ए प्रेशर कुकर, राइट? स्टीम निकलता है, सपोज स्टीम बंद नहीं हो रहा है, स्टीम नहीं निकल रहा, तो क्या हो जाएगा, जितना भी मटेरियल इनसाइड है अंदर ही रहेगा, बराबर? तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज ओजोन डिकम्पोजेस इन अ बैच रिएक्टर। तो क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, रेट ऑफ ओजोन डिकम्पोजिशन कम होते जाएगा। बट कंटिन्यूस रिएक्टर में क्या हो जाएगा, विल सी दैट लेटर। कंटिन्यूस रिएक्टर में क्या होता है, जैसे इनपुट आता है, जैसे बैच रिएक्टर यानी क्लोज रहता है, एंड कंटिन्यूस रिएक्टर में इनपुट आउटपुट होता है। Sorry. बैच में एक बार चार्ज कर दिया, उसमें कुछ अंदर नहीं आता, बाहर नहीं आता है। कंटिन्यूस रिएक्टर में इनपुट भी रहता है, आउटपुट भी रहता है कंटिन्यूसली। राइट? सो बैच रिएक्टर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो ओजोन डिकम्पोजिशन कम होते जाएगा। वैसे कंटिन्यूस रिएक्शन जैसा आ रहा है इनपुट, आउटपुट जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अ कंटिन्यूस रिएक्टर। बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अभी आप फोकस करो कि ये डेरिवेशन कैसे करना। इफ यू वांट टू डिराइव एन इक्वेशन, व्हाट आर स्टेप्स इन्वॉल्व एंड हाउ डू वी गेट द डिजायर्ड इक्वेशन, रेट इक्वेशन। Any questions on what you have seen so far in this example at least? मतलब सर ये याद रखना पड़ेगा ना दोनों स्टेप? या याद रखना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट अगर समझा मैकेनिज्म के स्टेप्स अगर समझ में आए ना, तो रिमेंबरिंग विल नॉट बी डिफिकल्ट। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यू कैन डू इट। यू डोंट हैव टू रट्टोफाई कि एक स्टेप ये सेकंड, स्टेप तो याद रखना पड़ेगा आपको पक्का। यू हैव टू रिमेंबर दिस, फर्स्ट स्टेप क्या, सेकंड स्टेप क्या है, उसके बाद if you understand the concept, it is easy. यस सर। Okay, ये याद रखना पड़ेगा, because this will not be given in the problem. You have to remember कि steps क्या है. But once you know the steps, first step, second step, then it is easy if you remember the or understand the concept. ठीक है, so let's look at next second example. Decomposition nitrous oxide is found to proceed as follows. Overall reaction दिया है, N2O gives nitrogen plus half O2, and minus R N2O is equal to K1 into N2O square, concentration square, plus 1 upon divided by 1 plus K2 into N2O concentration. So looking at this rate equation, जो मैंने observation बताया था, what type of intermediate is indicated? Type 1 sir. Type 1, right? So that's my observation कि मैंने जो भी derivation देखा है उसमें ऐसा observation में है मेरा, ऐसा होता है, because ultimately we are not here to do trial and error. एग्जाम में आपको आएगा, आपको you'll get only 10-15 minutes to answer this question. You are not going to have time to do trial and error कि ठीक है ये करना वो करना, ये that is for researchers. Our job is to understand what are the steps involved and then solve a particular example. Okay, so what is the order of this reaction with respect to N2 and overall, right? वो भी करने का है. So what is the order with respect to N2O? क्या होगा बताया था मैंने कल. सर डिपेंड करेगा N2O के concentration पे। हाँ, right. So if the concentration is high, क्या होगा? Then 1, Then 1. If concentration is low, then 2. समझ में आया नहीं सबको आपको? Yes sir. So essentially we are comparing denominator में this term and this term. If the concentration is high, this term is high, you can ignore 1, so our order is 1. If the concentration is low, then this term is low, you can ignore this term and then you get order 2. Okay, so mechanism यहाँ पर जो दिया है step 2, 2 step लिया है यहाँ पर भी. So we are saying N2O, that means 2 molecules of N2O give N2O plus 1 activated complex or transition complex
or activity, whatever, intermediate N2O star. So again यहाँ पर reversible लिया हमने, but now we are going to see something else. Step 2 में N2O star is decomposing to give N2 plus half O2. Right? जो intermediate है, as soon as it is formed, and this is fast reaction, intermediate formed is fast, and second step is decomposition, which is slow reaction. So second step is rate determining. Again hypothesis, right? अगर हम if we are starting from scratch and we are trying out different combinations, different things, we'll assume certain things कि ये होता है, okay, ये होता है, and see if we get the rate equation. नहीं मिल रहा तो you assume something else. Again try it out and derive an equation. If it matches experiments, fine. If it doesn't, then go back again, assume something else. Okay. So rate determining step ये रहेगा, तो what is rate of formation of N2 is equal to K3 into concentration of intermediate. ठीक है. Now what we need is an expression for the N2O star or intermediate concentration in terms of measurable quantities. Measure क्या कर सकते हैं हम? What are we तो can और O2 का concentration. You can measure N2O, you can measure our nitrogen, you can measure oxygen, right? So these we can measure. So we need equation for N2O concentration in terms of nitrogen and oxygen, and intermediate in terms of N2O, nitrogen and oxygen. And other thing we observe is rate equation is 1 plus concentration term, so it indicates a steady state approximation. Right? Now how do we actually determine steady state approximation? At steady state, what do you mean by steady state approximation? When you say steady state approximation, मतलब क्या उसका? dx by dt equals to 0. Rate of formation of intermediate is equal to 0, right? Or rate of change of intermediate is equal to 0. बराबर? dx by dt is equal to 0. बराबर. Now, what we find out? We don't use step 1. We use step 1 plus step 2. That's the difference. पहले इसमें step 1 use किया था. Now, because क्या है कि we are saying कि at any point the rate of change of intermediate formation is 0, or rate of change of intermediate concentration, sorry, is 0. That means rate of change of concentration of, और दूसरी बात याद रखने का, यहाँ पर जो लिया हमने is irreversible and this is reversible, बराबर. पहले के समान ही है. First step was reversible, second was irreversible. But now we are saying at any point in time, at any point, we are not talking about equilibrium, so we consider only step 1, right? A and B. जैसे पहले A लिया था और B लिया था, right? We considered only first step for calculation of intermediate. Now we have to consider both the steps for calculation of intermediate, because we are saying at any point the rate of change of intermediate at any time is equal to 0. यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है. फर्क समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट का? Equilibrium means it's only for reversible reaction. It can be only for one step, one reaction, reversible reaction. When you talk about steady state, we have to consider both the steps, because यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, रिवर्स में डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो यहाँ पर फॉर्मेशन रहेगा, रिवर्स में कंजम्पशन रहेगा, और यहाँ पर भी कंजम्पशन रहेगा. सो वी टेक ऑल द 3 steps, or first 2 steps. First is reversible, second is irreversible, and get the total concentration, and that should be equal to 0. ठीक है. So we have to combine step 1 and step 2. The rate of
rate equation of intermediate is dn2 star is equal to r dn2 star is equal to rn2 star is equal to dn2 star by dt is equal to first step में कहाँ गया k1 into n2 स्क्वायर आएगा फॉरवर्ड, रिवर्स में k2 into n2 into n2 star, right? So first step forward is minus, forward is plus, reverse is minus, और एक और आएगा minus k3 into n2 star. Right? So that's what I have written here, k1 into n2 square minus k2 into n2 into n2 star minus k3 into n2 star. So that is now the rate of change of intermediate time for this mechanism or this proposed scheme of reactions, and that at steady state is equal to 0. So now this equation 2, or this equation for rate of formation of N2 star or rate of change of N2 concentration with time is equal to 0 liya. So right hand side becomes 0, and what we get is k1 N2O square minus k2 N2O into N2 star minus k3 N2O star is equal to 0. तो N2 स्टार के टर्म्स एक साइड लेके आ गए हम यहाँ पर k1 N2O कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इक्वल टू k2 N2 into N2 स्टार प्लस k3 N2 स्टार. N2 स्टार कॉमन निकाला हमने, इन द ब्रैकेट वी गेट k2 into N2O plus k3. So we can take this term on the right side, left side, and we get N2O star concentration is equal to k1 into N2O square upon k3 plus k2 into N2O concentration. समझा कि ये कैसे आया? Any questions? कितने लोगों ने समझ में आया? Raise your hand. Okay, only one person. बाकी सबको समझ में आ गया क्या? मेरे को समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो 2-3 लोग को समझ में नहीं आया कि क्या नहीं समझ में आया विराज? विच स्टेप और कुछ भी समझ में नहीं आया? सर वो टाइप 1 आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ भी नहीं समझा. ओके, टाइप 1 सी आइडेंटिफाई करने का देयर इज नो रूल गिवन इन बुक एनीवेयर. इसमें ऑब्जर्वेशन की इस टाइप का रेट इक्वेशन रहेगा तो टाइप 1 होता है, इस टाइप का रेट इक्वेशन है तो टाइप 2 रहता है. ओके, सो जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. स्टेप 1 स्टेप 2 समझ में आया? फास्ट एंड स्लो रिएक्शन. Yes, sir. ये याद रखना पड़ेगा अपने को, देयर इज नो ऑप्शन बिकॉज नाउ वी आर नॉट डूइंग ट्रायल एंड एरर. दिस वी हैव टू रिमेंबर कि ऐसा ऐसा फर्स्ट स्टेप होता है, ऐसा सेकंड स्टेप होता है, राइट? एंड वी से दैट सेकंड स्टेप इज स्लो स्टेप, दैट्स द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. सो वी राइट रेट इक्वेशन फॉर द सेकंड स्टेप, दैट्स द ओवरऑल रेट, वही रहता है. स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट कंट्रोलिंग. सो वी राइट rate of formation N2 is equal to K3 into N2O star. Okay. So now what we need to do is we need to find or substitute for N2O star in terms of concentration of nitrogen and oxygen and N2O. Okay. And because we know that rate equation has 1 plus concentration term in the denominator, we know that it has to be type 1. So type 1 में type अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टाइप 2 एंड टाइप 1. अगर ये समझ में आ गया ना देन आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगा. टाइप 1 में क्या किया था, टाइप 2 में क्या किया था हमने? टाइप 2 वाज इक्विलिब्रियम, राइट? इक्विलिब्रियम मींस इट्स ऑलवेज फॉर अ रिवर्सिबल स्टेप और रिवर्सिबल रिएक्शन. बराबर है?
Correct? Yes, sir. Yes, Right. sir. So in when you say it's a type 2, that is equilibrium. When you talk about equilibrium, we always will consider only this reaction or step 1 to get the concentration of N2O star. बराबर पहले स्टेप पहले डायरेक्शन में ऐसा किया था, राइट? वी कंसिडर्ड ओनली द फर्स्ट स्टेप टू गेट द concentration of the intermediate. Ultimately ये जो type 1 type 2 है, its step only is to find the concentration of intermediate in terms of known quantities. That's the only purpose. Equilibrium जब बोलते हैं तो we use step 1 or reversible reaction to get the concentration into a. When you talk about steady state, which is type 1, then you consider both, because we talk about steady state में क्या होता है कि rate of change of intermediate is 0. Rate of change means formation minus consumption, right? Formation यहाँ पर हो रहा है first step में forward reaction, consumption reverse reaction, plus consumption is in step 2 also, right? So forward reaction plus reverse reaction minus, or a second step minus, then only will get the rate of change of intermediate with time. समझा गया ये? Yes, sir. Right? Once you understand this, everything else is simple. Everything else will fall into place. उसके बाद कुछ नहीं है, right? So ये सब यही किया हमने कि rate of formation of intermediate और Rn2O star is equal to dN2O star concentration upon dt is equal to forward का K1N2O square minus reverse का K2N2O into N2O star minus step 2 का K3 into N2O star. And now we know that steady state है तो ये total जो है has to be equal to 0. That means this equation 2 or this step rate of formation N2O star is equal to 0 लिया तो राइट हैंड साइड बिकम्स 0, और उसको हमने सिर्फ रीअरेंज किया, N2O स्टार एक साइड लेके गए और बाकी टर्म एक साइड लेके गए, तो वी गेट N2O स्टार इन टर्म्स ऑफ N2O. समझा क्या विराज? Yes, sir. Got it. Yes. Okay. So once you get this N2O star in terms of measurable quantity, again N2 we can measure, so we can substitute in the rate equation, जो हमारा सोर्स स्टेप था उसका rate equation, which is Rn2 is equal to K3 into N2O star. Substitute किया हमने, we get Rn2 is equal to K3 into K1 N2O square upon K3 plus K2 into N2. Right? और दूसरा ये देखना है कि उसको क्या चाहिए, what he wants is, if you look at the problem statement, he wants Rn2 minus Rn2, right? उसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उसको N2O चाहिए, right? तो from here do we know the relation between Rn2O and Rn2? Yes, sir. क्या है? So minus Rn2 will be equal to Rn2. Right? So that we know, right? So once you know this, you can actually get the question for 1 plus R. Right? तो वही किया हम यहाँ पर, ओवरऑल रिएक्शन, right? ये रिएक्शन से हमारे को मिल गया. So what we do is minus Rn2O is equal to Rn2 sorry, is equal to this equation 4, K1 K3 N2O square upon K3 plus N2O K2 N2O, right? But we want 1 plus something, right? So divide numerator and denominator by K3 right hand side का, and what we'll get is minus Rn2 is equal to Rn2 is equal to K3 यहाँ से चले जाएगा ऊपर से, तो K1 N2O upon 1 plus K2 upon K3 N2O. Right? And we can write this as another constant K prime,
and that's what we get. Minus Rn2 is equal to Rn2 equal to K1 N2O square upon 1 plus K prime N2O. And that's the desired equation. Yes, sir. Okay. Right? समझा? So that matches experimental rate equation. So that's correct. Again, वो हमने देखा था, right? तो concentration पे second order रहेगा, high concentration पे first order रहेगा, right? This is very simple. ये आपको पता है. So at low concentration, second term is much less than 1. So we can ignore that and we get second order. At high concentration, second term is much greater than 1 and we get first order reaction. Any questions? सर ऑक्सीजन के टर्म्स में लिखना हो तो सिर्फ 1 डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड बाय 2. हाँ, राइट. ऑक्सीजन टर्म्स में लिखना है तो इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पर दिए, इफ यू लुक एट द ओवरऑल रिएक्शन, कहाँ गया, राइट, इज इक्वल टू O2 upon 0.5. बराबर. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? थोड़ा घर जाके फिर से पढ़ो, बिकॉज इट्स नॉट एन इजी कॉन्सेप्ट. इट्स थोड़ा अगर समझ में आ गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दैन इट्स वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर द 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स जो भी रहेंगे रिएक्शन के, बाकी सब विल फॉल इनटू प्लेस. सर कौन से बुक का क्वेश्चन है ये? 11th स्पेल का. ओके सर. 11th स्पेल के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम मोस्टली. ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है 11th स्पेल का. And if you, I don't know whether you know about it, there's a book called by Gavane. It's also a good book. उसमें काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व है और शायद इसका सोल्यूशन भी वहीं पर दिया है. There are many solved problems of lens spell in Gavane. So that's also a good book. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? Okay, so if there are no questions, we'll stop here and continue next week.